हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आप लोगों को पता होगा ये लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पहले क्लास हमारा है ये। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। फिजिक्स का जो ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दिस ब्रांच इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट इन फिजिक्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, electro means electric charge and static means at rest. So electrostatics means electric charge at rest. So electric charge अगर rest में होगा तो फिजिक्स का ये ब्रांच हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। So before going to the topic, I will try to view on all the chapter learning goals. So first we will study about the charge. Next, what are the types of charge? Then continuous distribution of charge. After that we will study what are the properties of charge. Then we will study about electrification of charge. Then permittivity, that is epsilon. Next, what are the law of charge? Next, what is the law of force? We will study about Coulomb's law और electrostatic force इसको बोल सकते हैं। Then superposition principle for force. Next, electric field and intensity, मतलब electric field intensity के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद electric dipole and electric dipole के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद torque on a dipole in uniform electric field। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क कैसे एक्ट करता है डाइपोल के ऊपर, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल कैसे आ रहा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, व्हाट आर द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज। वी विल स्टडी ब्रीफली अबाउट दिस थिंग्स। Next we will study about electric flux, that is phi E. After that we will study about Gauss law and its various applications. Okay. So first of all we will study about what is charge. So charge, as all of you know, inside an atom actually proton and neutron is there. Okay. Apart from this, the outer part of the nucleus, see, suppose this is the nuclear part, this is known as the nucleus of an atom, and this portion is called the extranuclear part. So inside the atom, proton is here and electrons are revolving around the nucleus in separate different orbits. Okay, so this total whole as a atom is actually electrically neutral, since inside an atom actually the number of protons inside the nucleus is equal to the number of electrons that are present outside the nucleus is same, means number of protons is equal to number of electrons. So total charge of the whole atom is zero, means we can say that atom is electrically neutral. So how we can say that a body is a charged body or not? If this number of electrons and number of protons are different in a body, then we can say that the body is a charged body. If the number of electrons is not equal to number of protons and the difference in the number of electrons and number of protons is known as a charged body. Okay, so first चार्ज के बारे में हम बताने वाले हैं, तो हम डेफिनेशन बोल देंगे। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। हम जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ने चाहेंगे, फर्स्ट उसका डेफिनेशन बोलेंगे, उसका इक्वेशन उसके बाद बोलेंगे, देन
what are the units, then dimensions. After that we will study about what are the special notes of it. So ये लर्निंग गोल्स पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे चार्ट्स. ओके, सो मैं कुछ टाइम लेना चाहता हूँ जिसके उसके अंदर आप ये सब नोट डाउन कर सकते हैं. सो प्लीज जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए. हम वन बाय वन ये लर्निंग गोल्स के ऊपर हम जूम आउट करेंगे. राइट? ओके, सो क्विक राइट इट डाउन. ओके, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट, what is charts, right? So I have already told that if there is a difference between the number of electrons and number of protons, if there is difference between number of electrons and number of protons, then the body is said to be a charged body. Sorry. If there is a difference between the number of electrons and protons, then the body is said to be what? The body is said to be a charged body. Okay, so if there is a difference between the number of electrons and number of protons, then the body is said to be a charged body. So this is one type of definition of the charged body. In other words, we can say that charge is the product of what? This is current. Charge is the product of current and time of flow. So charge is the product of current and time of flow. अगर एक कंडक्टर में हम बोलना चाहते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है, सपोज 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है टी टाइम के लिए, तो हम बोल सकते हैं कि उसमें क्यू चार्ज ही फ्लो कर रहा है. ओके, उसमें क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टडीड अबाउट द डेफिनेशन पार्ट. दिस इज द डेफिनेशन एंड दिस इज फ्रॉम दिस यू कैन आल्सो से दैट चार्ज इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम ऑफ फ्लो. नेक्स्ट, व्हाट आर द यूनिट्स? Okay, so what are the units of charge? What are the units of charge? Actually, charge has 3 units. What are these? First is SI unit, then ESU, third one is EMU. This is standard international system of units. This is electrostatic unit, electromagnetic unit. These 2 units are CGS units. Okay, SI, ESU, EMU. So charge का SI unit क्या होगा? Coulomb. What is the SI unit of charge? Coulomb. What is the ESU unit? Start coulomb. What it is? Start कूलम. ओके, ये यूनिट क्या है? ये यूनिट होगा व्हाट? आप कूलम. सो दीज आर द 3 यूनिट्स ऑफ चार्ज. कूलम, स्टार्ट कूलम, आप कूलम. सो इफ यू वांट टू आस्क व्हाट इज 1 कूलम ऑफ चार्ज, सर? व्हाट इज 1 कूलम ऑफ चार्ज? हियर
Now we can say that what is 1 coulomb? What is 1 coulomb of charge? So 1 coulomb of charge is 1 ampere into 1 second, right? So from this formula of charge, we can say that Q is the charge, that is 1 coulomb in SI, I is the current, that is 1 ampere in SI, and T is second, that is 1 second. So what is 1 coulomb? When 1 ampere of current, flows through a conductor for 1 second, then we can say that the charge is of 1 coulomb. Once again, when 1 ampere of current flows through a conductor for 1 second, then we can say that the charge is of 1 coulomb. Similarly, in ESU, what we can write? 1 start coulomb of charge is what? 1 start ampere into 1 second. Similarly, what we can say? When 1 start ampere of current flows through a conductor for 1 second, then the charge is of 1 start coulomb. Next, 1 half coulomb equal to what? 1 half ampere into 1 second, right? So when 1 half ampere of current flows through a conductor for 1 second, then we can say that the charge is of 1 half coulomb. Okay. Now we'll study what are the relations among these different units. What are the different relations among the units? Relations among the units. Relations among the units. Okay. So, what are the relations? 1 coulomb is equal to 3 into 10 to the power 9 start coulomb. That is in ESU. That equal to 1 by 10 half coulomb, right? So next, we can write 1 half coulomb equal to 10 मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से, कितना होगा? 10 यहाँ से मल्टीप्लाई होने से 10 coulomb हो गया. नेक्स्ट 3 into 10 to the power 10 start coulomb. So which is greater? 1 half coulomb. So 1 half coulomb is greater than 1 coulomb is greater than 1 start coulomb. याद करो. This is the basic relation that 1 coulomb equal to 3 into 10 to the power 9 start coulomb, that equal to 1 by 10 half coulomb. So next we can say that 1 Faraday. What is 1 Faraday? That is the largest unit of charge. What is 1 Faraday? What is 1 Faraday? Now charge of 1 mole of electron. What? Charge of 1 mole of electrons. Charge of 1 mole of electrons. Charge of 1 mole of electron is how much? 96, that is 96,500 coulomb per what? Mole. Okay. So this is the largest unit of charge. And what is the smallest unit of charge? Start coulomb or Franklin you can say. Okay. Next, we can say 1 electron is how much, right? 1 electron is how much? One electron is what? Charge of 1 electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay.
So from this we can say that 1 coulomb equal to 1 by 1.6 into 10 to the power minus 19 watt. So 1 coulomb equal to, if we divide this thing, then you will get 6.25 into 10 to the power 18 number of electrons. So what does it signifies? 1 coulomb of charge contains 6.25 into 10 to the power 18 electrons. इतने इलेक्ट्रॉन ही रहेगा कहाँ पे? 1 कूलम ऑफ चार्ज पे. अगर मैं पूछूंगा कि 2 कूलम ऑफ चार्ज पे कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2 into 6.25 into 10 to the power 18 electron. Okay. Next, from this relation we can write 1 electron equal to 1.6 into 10 to the power minus 19. 1 coulomb is how much? Start coulomb. 1 coulomb is equal to 3 into 10 to the power 9 start coulomb, right? That I have already told. So in place of coulomb, what we can write? 3 into 10 to the power 9, what? Start coulomb. Okay. So that will be equal to 4.8 into how much? 10 to the power minus 10 start coulomb. Okay. Next from this also we can write what? 1 electron equal to 1.6 into 10 to the power minus 19. 1 coulomb is 1 by 10. What? Half coulomb, right? Next, into 1 by 10. Okay. So 1 electron is equal to 1.6 into 10 to the power minus what? 20. Right? So these are the different form. Means 1 coulomb is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. 1 coulomb is 4.8 into 10 to the power minus 10 start coulomb. Next, 1 electron equal to 1.6 into 10 to the power minus 20 arc coulomb. Okay. Next thing is what is the dimensions. First we have told about the definition of charge. Next, the equation of charge. Next, the unit and what are the relations among the units. Now we will study what is the dimensional formula, what is the dimensions of the charge. Okay. So what are the dimensions? As all of you know that Q is equal to what? IT. So dimensions. So dimensional formula of charge is Q equal to IT. So Q equal to, right? So I का dimensions क्या है? Current का ampere. That is A1. T is the time. So T1. And simply you can write the dimensions of charge is equal to M0, L0, T1, A1. Okay. And very important thing that charge is a scalar quantity, right? Scalar quantity. Why it is a scalar quantity? If you want to add charge, suppose 1 coulomb, 2 coulomb, minus 3 coulomb. So if you want to add these charges, then you can add it just simply algebraically. Since we can add the charge algebraically, we can say that it is a scalar quantity. Okay. Now we will study what? We will study the types of charge. Okay. So what are the types of charge? There are two types of charge. One is positive charge, another is negative charge.
सो पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या है और नेगेटिव चार्ज मतलब क्या है? अगर किसी बॉडी में ज्यादा चार्ज होगा मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, सो मीन्स यू कैन से दैट एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इन कंपेयर टू प्रोटॉन्स, देन यू कैन से दैट दिस इज ए नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। पॉजिटिवली चार्ज मतलब व्हाट? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें प्रोटॉन्स ज्यादा होगा, इसमें क्या ज्यादा होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Then we can say that it is a positively charged body. If number of electrons is greater than number of protons, then you can say that it is a negatively charged body. For example, suppose you will consider sodium atom. So what is the atomic number of sodium? What? 11, right? So sodium, atomic number of sodium is 11. So 11 is the atomic number. So number of protons in sodium is equal to 11. Number of electrons is equal to also 11, right? You can write this 23. What does it signify? This is the atomic number and this is the mass number. This contains, this signifies proton plus neutron. This signifies only electrons, number of electrons. So here number of electrons is 11. Number of proton is, since it is a neutral particle, neutral atom, so number of protons is equal to number of electrons. That is 11 and 11. What is the number of neutrons? Number of neutrons is 23 minus, since this 23 is proton plus neutron, so proton is 11. So 11 plus n equal to 23. The number of neutrons is 23 minus 11. It is 12. The number of neutron is 12. Since here number of proton is equal to number of proton is equal to number of electrons, so this is a neutral particle. Okay, neutral atom. Okay, sir. So if you will consider Na plus, plus means what? Positive charge. It loses electrons. So plus means one electron it will lose. It will lose only one electron. So before that, sodium has 11 number of electrons. Now Na plus contains what? 10 electrons. Plus means loss of electron. Okay, and number of protons is that same. What? 11. Okay. So Na plus का चार्ज कितना होगा बाद में बताएंगे. अभी ये देखो, अब में अभी डिस्कस करेंगे वाले. सो अगर नेक्स्ट एग्जांपल बोलेंगे कि Cl माइनस, क्या? Cl माइनस. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17. सो Cl माइनस मतलब क्या है? माइनस, नेगेटिवली चार्ज्ड. सो माइनस मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड. दैट मीन्स it gains electrons, excess of electrons. So atomic number कितना है? पहले Cl में, न्यूट्रल Cl में 17 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स था, 17 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था. अभी Cl माइनस होने से क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गया होगा. 17 था पहले, अभी क्या होगा? 18 हो गया. पर प्रोटॉन जितना था वही रहेगा. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू व्हाट? 17. Okay, so you can find out some other examples also. Fe2 plus में ये टास्क है, अब कर लो. Fe2 plus में कितना इलेक्ट्रॉन कितना प्रोटॉन होगा? Fe3 plus में कितना होगा? Yeah, so these two you can write, find out. Okay, next thing we will study what are the
right. Okay, so now we will say about पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिव चार्ज. समझ में आ गया ना? ओके, वेरी गुड. So charged body is positively charged means what? Charged body is positively charged means it loses electrons. And also, since electron contains mass, so it also loses mass. So it also lose electrons and lose mass. Suppose a body loses 2 electrons, that body will also lose the mass of 2 electrons. Okay. Next, negatively charged means, अभी हमने बोला है कि negatively charged मतलब क्या होगा? Excess of electron means excess electrons or it gains electron, मतलब उसमें ऐड होगा, ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन्स, बट प्रोटॉन सेम ही रहेगा. तो अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा ऐड होगा तो मास भी उस हिसाब से ऐड होगा. सो इट गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड गेन मास. अभी इन जनरल हम बोलेंगे, अगर एक बॉडी लूज करता है कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो कितना चार्ज लूज होगा, अगर गेन करता है तो कितना चार्ज गेन करता है. ओके. So now, what is the formula for number of electrons lost or gained? Number of electrons lost or gained, उसका फॉर्मूला क्या होगा? N equal to Q by E, right? What is Q here? जितना चार्ज होगा, वो बॉडी जितना चार्ज होगा. सपोज 2 कूलम चार्ज हुआ, हम बोलेंगे कि अगर एक बॉडी को 2 कूलम चार्ज देंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा. ओके. अगर एक बॉडी को 2 कूलम या 3 कूलम, सपोज 3 कूलम चार्ज देंगे तो 3 कूलम चार्ज देने से कितना इलेक्ट्रॉन वहां से जा रहा होगा, वो हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं. व्हाट इज E? E का वैल्यू हम लोगों को पता है, E इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. एग्जाम्पल के तरफ से आप ले सकते हैं, अगर एक बॉडी से 2 कूलम चार्ज उसको वहां से छीना गया, मतलब किसी और को दे दी, ठीक है. सो 2 कूलम चार्ज एक बॉडी से ट्रांसफर हुआ, सो उसमें से कितना इलेक्ट्रॉन गया. सो यहाँ पे Q कितना है? 2 कूलम, right? E we know that 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. So कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और कितना नंबर ऑफ जहां से गया होगा वो लूज किए, तो उसमें से हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस कितना होगा. N equal to Q by E, right? So Q is how much? 2 coulomb by E is how much? 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Coulomb which you can cancel out, right? So 2 by 1.6 into 10 to the power minus 19. We have already know that 1 by 1.6 into 10 to the minus 19 is how much? 6.25 into 10 to the power 18. So 2 times 6.25 into 10 to the power 18 what? Electrons. That means वहां से 2 into 6.25 into 10 to the 18 number of electrons लॉस हो गया. जहां पे भी गया होगा इतने ही इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुआ होगा. ओके. नेक्स्ट, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन के फॉर्मूला हम ये बोले तो मास कितना लॉस होगा, मास कितना गेन होगा, उसका फॉर्मूला हम इसके बारे में बोलेंगे. ओके. ओके, लिख लो क्या. Next, mass
लॉस्ट और गेन्ड। कितना मास लॉस हुआ और कितना मास गेन हुआ, उसका फार्मूला क्या है, m इक्वल टू, सपोज एक बॉडी से, एक चार्ज बॉडी से, सपोज एक न्यूट्रल बॉडी से 2 कूलम चार्ज गया, मतलब या फिर आप बोल सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन वहां से गया है, तो कितना मास प्लस क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा, मतलब 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन जनरल हम बोल सकते हैं कि सपोज एक बॉडी से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ या गेन हुआ, तो कितना मास गया होगा, मतलब लॉस या गेन होगा, n टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। n also how much, q by e times mass of electron. If you have n, then you can write this formula. If you don't have n, you have charge, then mass equal to m equal to q by e into mass of electron. Mass of electron is how much? Mass of electron is 9.11 into 10 to the power minus 31 kg. Okay. Okay. From this example also we can calculate what is the mass lost or gained. From this example, चार्ज कितना हो गया, 2 into this much. So mass का कितना होगा, यहाँ से इस एग्जाम्पल को हम ले सकते हैं. So m equal to n times mass of electron. So n is how much, 2 into 6.25 into 10 to the power 18. Mass of electron is how much, 9.11 into 10 to the power minus 10 to the power minus 31 kg. Okay. So this is the mass. You can multiply these things. So mass lost or gain इतना ही हो गया. मतलब अगर एक बॉडी से 2 कूलम चार्ज लॉस होता है तो इतने इलेक्ट्रॉन वहां से गया होगा, लॉस किया है. कितना मास लॉस किया है, इतना मास लॉस किया है. ओके, अच्छे से देख लो. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट हम बोलेंगे कि अगर आपके पास एक बॉटल पे 1 लीटर वाटर है. ओके, सो उसी 1 लीटर वाटर पे कितना वाटर मॉलिक्यूल्स होगा, आपको कैसे पता होगा, यहां पे देखिए तो हम बताएंगे. ठीक है.